The sole purpose of today's session is environmental factors which are giving us diseases. We actually these all seems to be very harmless and very mild in nature, and we do not give any heed to the environmental factors, and that is why we have a specific protocol to follow this environmental triggers which gives us a lot of diseases, and we keep repeating these mistakes sometimes many times in a day, and that is the reason we are getting so many diseases now becoming common, including many cancers, including the breast cancer and the uterine cancer for women and other various other diseases. So let's begin. One of my trip, I saw this Siachen Warrior banner. They say ki the 6 best doctors are sunshine, water, rest, air, exercise, and diet. So we are working on diet and exercise. We have already given you rest and stress. We have already have a generalized session on it. Sunshine, we stress you a lot कि आप outdoor workout कीजिए so that you go in the sun, and sun has not just UV rays, it has infrared rays and various invisible spectrum which we gives us various anti-cancer antioxidants like melatonin and glutathione. And water and air, of course, are very important. Now these things are getting polluted gradually, especially water and air in cities like Delhi. So how to counter that? We will also some of these things will be in our hand to change, to find out solutions, and some we need to accept it and find ways so that we can decrease their harmful effects on our bodies. So that is where this session is very important. All these environmental factors, what they do is they give mutations to the DNA present in our nucleus of cells. All the cells have the nucleus and except RBCs. So they give damage to this DNA, also to the mitochondrial DNA, and gradually when these mutations are keeping accumulated, then we get various diseases like diabetes, obesity, fibrosis, pulmonary disease, many other neuronal damages, Alzheimer's, etc., and cancers also. Even the as we age, we keep collecting these mutations, and we can even decrease our speed of aging or age gracefully, as we say, by decreasing this damage to our mitochondrial and nuclear DNA. तो हमें पहले तो जो सेल को स्ट्रेस दे रहे हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उनको डिक्रीज करना है. तो some of the common factors you already know, but collectively they are called xenoestrogen. Why these are important? Why these are called xenoestrogen? Because these are non-biodegradable products. They keep on collecting in the fat in our body, or they have a very long half-lives. So when you are exposed to xenoestrogens, they are collected in your body fat, and then they stay there and keep giving you various false estrogen triggers. तो होता क्या उससे? You stay in a high estrogen state always. हाई एस्ट्रोजन स्टेट्स में रहने की वजह से ही ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, हार्मोनल डिजीजेस, पीसीओडी, मूड स्विंग्स, so many female disorders comes into picture, endometrial cancers, endometrioma, and then there are milder diseases, and even males have breast cancers. Prostate cancer has a role of these xenoestrogen. तो that is where xenoestrogen के बारे में जानना इसीलिए important है, because then you know कि कैसे हम xenoestrogen से बच सकते हैं, how to prevent ourselves from xenoestrogen. अब xenoestrogen आते कहाँ से? The sources of xenoestrogen. See, they have estrogen like effect. They are present, means they keep on collecting in the body and gives us cancers, obesity, infertility. See, so many IVF centers have been opened up now. Miscarriages, diabetes, early onset puberty, which is very common now, means you start menstruating the girls at the age of 8 or 9 now. So this is a pictorial representation how xenoestrogen works in our body, and how it falsely, when we do not need estrogen, it increases the high estrogen state. अब उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं. यू गेट इरेगुलर पीरियड्स, हैवीनेस इन द बॉडी, ब्लॉटेडनेस. ये बहुत कॉमन है इन फीमेल्स टू गेट लोअर लिम्ब एडिमा. then the libido decreases, bloating, sudden weight gain, mood swings, hot flashes, many other. PMS is very common in young girls. Then breast tumors, breast cancer, fertility issues, fatigue, you can name as any. And also because these are
hormones, they gives you indirectly also are responsible for giving you thyroid and other hormonal imbalances in your body, and it can give you female and male both cancers. Males also, prostate, testis and breast cancers are now becoming common in males. So these are the sources of estrogen. Number one is chemicals, especially the pesticides, insecticide and deodorants, various cosmetic agents. There have been a study that normal Indian women use more than 420 chemicals in a day. Normal office going, those who use regular makeup and these cosmetic products. Then meat and dairy, that is why our protocol is always vegan. यहाँ पे आपको और बेनिफिट पता चलेगा कि why we stress so much on vegan diet. ठीक है. Then comes beauty, skin care products. Then the fruits which are not being grown organically. I told you na, some things will be in our hands, something will not be, but we will try to minimize their effect on our body and our system. So try to buy organic, or if you are able to or can work, so try to grow some of your food items in your balconies, on your terrace. You can do that. Then plastic, very common, very difficult to remove. All the plastic storage containers, especially for liquid items, and the microwave, of course. These are the major source of xenoestrogen. Then all these plastic containers where we order food from various food delivery apps, and they are packed mostly in this, and the plastic toys and other things for the kids. Now, the most important one which no doctor talks about, no oncologist talks about, is hair color. Most hair colors have benzene. These companies keep on telling ammonia free, but there are many organic compounds like benzene, toluene and lead acetate. lead के बिना शायद ही कोई डाई बनती है दुनिया में. Even your normal distemper paints, etc. So they can cause various allergies, and also you can get, gradually they will cause mutations and DNA damage, these chemicals. आपने कभी देखा भी होगा, there are sometimes if someone get shaved their head, जो regular dye use करते हैं, especially males, you can see they have some white patches of vitiligo starting in, especially on the hairline. You must have observed about it. तो हेयर कलर से बड़ा शायद ही फीमेल्स के लिए जहर हो सकता है, एंड दैट इज, दिस इज वन थिंग विच दे keep on using almost every 2 weeks or a month, which is giving them breast cancer especially, and there have been many studies published about this. One of those is here. So permanent hair color, straighteners, these hair dyes, they can increase breast cancer risk by many folds. This study is very vast. They've used more than retrospective study for 46,700 women. Then Reuters, which is one of the most credible news sources nowadays, and again the same thing, dark hair color dyes, how the environmental factors are becoming so important to give us cancers. And this is a very common, especially in summers we commonly use this. Aluminium, if you find a study, retrospectively do study of all the breast cancer, you will find 90% of breast cancers are found in upper and outer quadrant, that is the quadrant which is nearest to your axilla. Gradually रोज जब हम antiperspirants लगाते हैं, they all have aluminum salts. Aluminum, we all know, is a carcinogen also, and it is mutations causing chemical. That is why सब बोलते हैं ना कि aluminum में खाना कम पकाइए. That is the reason. Now there have been animal studies about this also. So when you regularly apply this antiperspirant on your axillary skin, it gradually get absorbed into your breast tissues, and as the accumulations of mutations are there are mitochondrial damage. The normal cells now turn into tumor cells and cancer cells. So this is one avoidable important daily activity which gives you cancers. Then ovarian cancers and talc, mesothelioma especially, they are very huge tumors, means many kilos कभी कभी ये बढ़ जाते हैं. तो the talcum powder has asbestos and various other fine particles which can give you ovarian cancer. So regular use of talc should be discontinued. The most important number one cause from the environment is the prescription drugs जो हम रोज यूज कर रहे हैं, especially immunosuppressive therapy and vaccines. We have talked repeatedly about this, आपको पता ही है, many videos are there on the channel. Then hormone therapy, OCPs, oral contraceptive pills, which are very commonly being used, especially
Now in the time of female liberation and female freedom, what we use is, there's of course it's a wonder drug ki bhai to avoid sudden means you can call it acute emergency contraceptive, जिसको आप लोग कहते हैं ना आई पिल, which has given you such a lot of diseases to women and it is not being promoted with its side effects. तो बहुत कॉमनली ये आजकल हमारा यूथ यूज़ करने लग गया, तो वी शुड अवॉइड दैट. देन द डायबिटीज़ मेडिसिन, जो रेगुलरली आप डायबिटीज़ मेडिसिन लेते हो, एंड मैनी एंटीबायोटिक्स बिकॉज दे इनडायरेक्टली हार्म योर गट माइक्रोबायोम. तो वेरी रिपीटेड यूज ऑफ injudicious use of antibiotics also can lead to various diseases. OCP, HRT and emergency contraceptives we already have discussed. Then the various antidepressant agents and sleeping pills also have various impurities which are now termed as carcinogen by WHO. Then of course proton pump inhibitor, ये तो हम लोग हमारा 70% adult population रोज ही यूज कर रहा है. Just they start their day with a Pantocid or Pandi or any antacid. Then various BP मेडिसिन, हाइपरटेंशन मेडिसिन. अब आप देख लो डायबिटीज़ हाइपरटेंशन तो इतना कॉमन है ही, अब उनकी दवाइयाँ भी हमें कैंसर दे रही है एंड इट्स ऑन द ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पेज ऑफ WHO. सी FDA have already banned various antacids, ranitidine, Zantac and Pantocids and etc. Then this is a newspaper clipping from Times of India. Indian government also wants कि all the antacids should be come with a warning for causing gastric cancers and also causing kidney damage, but I don't think it is being followed by the pharma companies right now. See the names of the medicines which are so commonly prescribed. Means आप किसी और दवाई को तो बाद में प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, पैन डी पेंटोसिड वगैरह सबसे पहले लिखी होती है. तो डेट इज़ वेयर वीगन डाइट एंड एन अल्कलाइन डाइट कम्स इनटू पिक्चर, जो आपको नेचुरली ही एसिडिटी को कंट्रोल कर सकती है. दिस इज द ऑफिशियल पेज विच आई वाज टॉकिंग कि WHO के ऑफिशियल पेज पे सी while certain all tell me certain salts, angiotensin 2 ACE2 receptor blockers, then pioglitazone जो एक बहुत commonly used salt है diabetes के लिए, and ranitidine. All these have nitrosamine impurities which are termed as potent carcinogen by WHO. This another same thing and they are saying कि it is just the tip of iceberg. अगर हम इनको बहुत सारी medicines जो हम regularly use करते हैं अगर उनको हम पढ़ें ध्यान से and found out their chemical content, they will be found to be. तो इसलिए the best possible way is to decrease your medications जितनी जल्दी आप, that is the whole purpose of our प्रोत्साहन program. Then your artificial jewelries and candles, ठीक है कभी कभी यूज में तो चलेगा, but if you use it very regularly, especially these scented chemical laden candles nowadays, they all give you fumes which are carcinogen. तो air pollution तो है ही which is unavoidable. We are creating more air pollution inside our homes using these things. Then plastic bottles we have already discussed. Xenoestrogen, again coming back to that, xenoestrogen कहाँ से आता है? एनिमल प्रोटीन सबसे ज़्यादा इससे लेडेड है. उसके अलावा यू गेट इट फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ऑल दिस केमिकल एडिटिव्स, द preservatives, the artificial colors, synthetic agents, emulsifiers which are permitted, food grade colors also which are permitted to be added to the food, have been known to give you xenoestrogen exposure with a very high amount. Almost every day you use food additives. ठीक है, WHO has already, the committee has been formed to find out the food additives which are more potent and more dangerous, so they have been able to put it on the labels of your various things. See these are common examples from our day to day life which I put it up. आप अपने बच्चों को भी इतना commonly देते हैं. Any tomato ketchup you see will have only, see the Kisan tomato ketchup has only 28% tomato paste. Rest of all is xenoestrogen which you call. Again these preservatives, these emulsifiers, these stabilizer, acidity regulator, all are considered under the category of xenoestrogen. Same way, hence see high fructose corn syrup. No, initially earlier they used to use cane sugar. अब ना वो फ्रक्टोज सिरप कौन आ गया है, वो तो और भी ज़्यादा जैसे गिव्स यू सच ए हाई इंसुलिन, व्हाट यू कॉल इंसुलिन स्पाइक, कि वो आप ना चाहते हो भी डायबिटीज़ हो रही है. इसीलिए हमारे बच्चों को ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ दोनों कॉमन होता जा रहा है एट ए यंगर एज. सिमिलरली योर फेमस मन की शक्ति तन की शक्ति बॉर्नवीटा. सी malt extract only 44%. malt extract, what is malt extract? It is nothing but a, जिसको आप सत्तू कहते हो ना, भुना हुआ आटा है
44%, and then all other things are simply emulsifiers and all the xenoestrogen which I told you. Again, these Kellogg's Chocos, 29% wheat flour only, wheat solids are 58%, rest of all is again xenoestrogen. These are very easily avoidable daily activities which you promote your kids towards diseases and obesity. The daily fruit drinks which they seem to be no bioengineered ingredients and no preservatives and whatever powerhouse of nutrients as they market it to be. See, only 1.2% lychee concentrate, rest all is xenoestrogen and reconstituted to only 10% of the rest are क्या है, शुगर है, वही कॉर्न सिरप है और बाकी सारा xenoestrogen. Same here, 1.53% of orange juice, rest all water and sugar and xenoestrogen. Again an avoidable, and for that matter all the packaged drinks have these profile only. Your favorite fruity, there's a clinical observation also. Fruity is one of the common thing causing tonsillitis. These are parents' observation to us, and these real fruits, so-called real, they call it na. 12% only juice concentrate, rest all xenoestrogen and water. Again, only 19% mango pulp, rest all again xenoestrogen and water. See कितना common है xenoestrogen, ये नाम भी हम लोग नहीं सुनते हैं, and this is how easily we are exposed to this. तभी ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, एंडोमेट्रियल इश्यूज, पीसीओडीज एंड हार्मोनल इश्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं. एंड द सो कॉल्ड नट बटर, जिसमें इसको पीनट बटर के नाम से बेचा जाता है, इसमें पीनट तो है ही नहीं. बाय वेट इट इज 55% शुगर, द फेमस नटेला and mostly all peanut butter, and then there are small amount of hazelnut, skimmed milk, palm oil. See, so healthy you are using. Similarly, your mayonnaise, the most favorite products of our kids to the day to day, again a carcinogen known as calcium disodium EDTA, flavoring agents, a lot of xenoestrogen here. xenoestrogen तो एक हो ही गया. अदरवाइज भी अगर देखें, द कैलोरी सरप्लस डाइट विच गिव्स यू मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तभी तो इतना कम होता जा रहा है ना एज टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ओबेसिटी, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ diabetes and hypertension and various other diseases. See, other than this xenoestrogen, you have high sodium content in all, means high salt is used to preserve as a preservative, natural preservative to all of these packaged foods. तो सोडियम का अलग नुकसान, हाई कैलोरी सरप्लस होने का आपके सामने एग्जांपल है. जस्ट ए पैकेट ऑफ लेज नीड्स 11 किलोमीटर ऑफ वॉक और रन. सी, आप लोग सब एक्सरसाइज चैलेंजेस पूरे कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हो आप लोग, एंड क्या मिलता है उससे? हम एक चिप्स का पैकेट खा के 11 किलोमीटर को ख़त्म कर देते हैं जो आपकी मेहनत है. सो ऑल दिस, इट्स सिंपल बर्गर नीड्स, स्मॉल चीज बर्गर विल नीड 5 kilometers अराउंड, मैक फ्राइज विल नीड 6 kilometer. So these are becoming daily food for our kids. And your favorite ice cream, this is the most commonly, means the highest amount of xenoestrogen you will find in ice creams only. Liquid fat, emulsifier, milk proteins, crystals, fat crystals, and lot of flavoring agents, all are stabilizer, all are considered to be your, and the food colors also to be xenoestrogens. ये सारे xenoestrogen एक ही साथ आपको रोज के आइसक्रीम में आपके साथ मिलते हैं. ऑफ कोर्स आई एम नॉट कंसिडरिंग द शुगर, हाई शुगर जो इसमें होती है वो तो एक अलग पार्ट है, एंड द फ्रक्टोज सिरप यूज होता है. एंड दैट इज व्हाई आई कीप गिविंग दिस एग्जांपल. बास्किन रॉबिन्स के ऑनर्स ने, दे हैव शंट देयर ऑल द देयर शेयर मार्क होल्डिंग, and then they are promoting a vegan diet. So summary, getting back to the summary again, these are the sources of xenoestrogen, and you need to minimize the daily exposure to these gradually. मुझे पता है, see, the exposure to chemicals in today's life cannot be reduced to zero, but we can at least be informed about these and make an informed choice and decrease their exposure. उसके बाद जो exposure हो जाता है उससे कैसे बचना है? As I told you ना, to decrease their effect on our body, we will improve our gut microbiome. The gut microbiome barrier, you every time you take a meal, 3 to 4 times whatever you're taking, every time you take a meal you are exposed your body to environmental factors, है ना. आप environment से उस वक्त जो है कम्युनिकेट करते हो थ्रू योर फूड,
the whole 6 meter length of your intestine is communicating with that environmental exposure, the xenoestrogen, whatever is unfortunately been added, unavoidably added to our food, we are reacting to that through our intestine. ठीक है, अब बात करते हैं intestine के. So Ilya Mechnikov, he has been instrumental in giving us that ki gut microbiome, the gut microbiome bacteria is very helpful for us. Their health will dictate our health. He conducted an experiment during the cholera epidemic in France 1982. He won a Nobel Prize for phagocytosis in 1907. So what he suggested that कुछ लोगों को cholera, when they are exposed to cholera bacteria, even then they do not get sick, and some get very sick to a deathbed. ऐसा क्यों था? Because he said कि कुछ लोगों का gut microbiome healthy है, strong है, which can decrease the growth of this cholera bacteria. Similarly, if the gut microbiome is healthy, the gut permeability is not high, you can decrease the absorption of these xenoestrogen and chemicals to your body. But later on, what happens is he died in first decade of 19th century, and then these things comes up. Means आपका एंटीबायोटिक कॉमन हो गया, सिजेरियन सेक्शंस कॉमन हो गए, डाइट्स आर वेस्टर्नाइज, देयर आर स्केलेबल मील्स जो हम इजीली स्केल अप कर सकें और लोगों को बेच सकें इजीली. देन हमने बैक्टीरिया को अपना दुश्मन मान लिया. वी ट्राई टू स्टेरिलाइज एंड किल आवर बैक्टीरियाज. एंड देन देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ माइक्रोबायोम. वी हैव डन ए कंप्लीट webinar on this, and the video is again on the channel. And 90% of our body cells are living in this gut microbiome. If you count the total number of our body cells, human cells are only 10% of all the gut microbiome cells. मतलब आपकी बॉडी में जितने सेल है उससे 10 गुना सेल्स इस गट माइक्रोबायोम में है. द वेट इज 2 पाउंड to 3 पाउंड, मीन्स 1200 से 1500 ग्राम का एक ऑर्गन है, विच इज़ नॉट कंसिडर एज ए ऑर्गन एंड विच इज़ नॉट बिन टॉट इन आवर मेडिकल स्कूल्स, मेडिकल करिकुलम. तो और हेल्थ विल डिपेंड ऑन दिस गट माइक्रोबायोम हेल्थ. अब गट माइक्रोबायोम हेल्थ को कैसे बढ़ाना है, लेट्स ब्रीफ अबाउट इट. अगेन द सेम थिंग कि हमारे पास ह्यूमंस हैव 20,000 जीन इन देयर जीनोम, एंड दिस गट माइक्रोबायोम इन टोटल हैव मोर देन 20 मिलियन माइक्रोबियल जीन्स. तो यू आर जस्ट ए पार्ट एंड जस्ट ए व्हाट वी कॉल पैरासाइट इन योर बॉडी. तो आप जो अपने आप को, तो घमंड तो यहीं से खत्म हो जाना चाहिए कि और सेल्स आर ओनली 10% ऑफ आवर होल बॉडी. सो इसको कैसे ठीक करना है, देयर कम्स द फील्ड ऑफ एपिजेनेटिक्स. गट माइक्रोबायोम और हमारी आदतों को ठीक करते हुए, जैसे जैसे हम आदतों को ठीक करते हैं, वी इम्प्रूव आवर डेली हैबिट्स, then we will improve our gut microbiome as well as our health. How? See, this is the leaky gut syndrome, which I told you. The gut permeability increases by the exposure of these chemicals, wheat and other food items, daily sugar you are taking, and we need to decrease this permeability. कैसे decrease होगी? Let's see. See, the gut is the center point of our whole health and disease. All the organs are directly or indirectly related to the gut, and because gut is the first and foremost thing exposed to environment through our food. तो gut को कैसे ठीक करना है? These are the things which are harming our gut. High वही fructose जो मैंने बोला, high glucose diet, high जो calorie surplus diet, alcohol, then bile acids. दो भी जितना भी आप additive food additives खाते हैं वो bile acids को increase secrete करते हैं, and the emulsifiers again xenoestrogen. म्यूसिन को डिक्रीज करते हैं. वी नीड म्यूसिन इन वेजिटेबल्स. तो जो म्यूसिन क्रिएटिंग वेजिटेबल्स है वो हमारे गट बैरियर को स्ट्रॉन्ग करेंगे. एंड व्हाट इज इम्प्रूविंग दैट? हाई फाइबर डाइट जो आप लोग खा रहे हो, द वीगन डाइट, एंड द एंथोसाइंस. द मोर द कलर इन योर fruits, the more the color in your vegetables, the more anthocyanins they have. So these are comparative studies. Gliadin जो आपके wheat protein है, ethanol, alcohol, bile salts, fats, emulsifiers, xenoestrogen and fructose. These are damaging for your gut, and what is good for your gut is vitamin A. आपकी गाजर में आया, बीट रूट में आया, vitamin D, glutamine, a lot of fibers, tryptophans which you are getting from your smoothies and nuts जो daily हम लोग आपको कर रहे हैं. Then cysteine से ग्लूटाथाइन बनता है. तो होमोसिस्टीन जो हम गुड प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स आपको दे रहे हैं उससे, द सोय प्रोडक्ट्स. तो दिस इज द लिस्ट which will provide the exposure from the environment getting to your gut, through your gut to your blood, and the body is getting inflamed. तो हमें इसको gut microbiome को healthy रखना है, and all the fermented products, mucinous vegetables, all the fibrous
fruits, vegetables, cruciferous vegetables, berries, bananas, then जितना भी fiber food है, pure honey also, then root vegetables, the कच्ची हल्दी जो आप बोलते हैं ना, turmeric, then the सूरन जिसको हम बोलते हैं, सूरन की सब्जी बनती है, वी कॉल इट ऑल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, सीताफल भी बोल सकते हो आप इसको, एंड देन गार्लिक, then through the whole allium family and the whole cruciferous cabbage family is very very good for, तो डेली आप जो ये लेंटिल्स स्प्राउट्स खा रहे हो ना, हम लोग आपकी डाइट में दे रहे, दिस इज द रीजन फॉर दैट। हम गट माइक्रोबायोम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आप एक्सपोजर, केमिकल एक्सपोजर होने के बाद भी आपको वो बॉडी में इफेक्ट ना कर। देन फर्मेंटेड फूड्स, इसके ऊपर पूरा सेशन लिया जाएगा बाय डॉक्टर गरिमा, एंड यू विल इन फ्यूचर be given recipes how to, one of the recipes has already been shared by sauerkraut, then we will have more recipes कि कैसे हम fermented food ऐड करेंगे आपकी डाइट। एंड दिस इज योर, नॉट योर, बट दिस वाज योर्स डेली ब्रेकफास्ट। देखिए कैसे जीनो एस्ट्रोजन से रिलेटेड है, रोज आप सुबह सुबह ही अपनी गट माइक्रोबायोम को डैमेज कर रहे थे, एंड दिस इज नाउ योर ब्रेकफास्ट विच यू आर टेकिंग, विच आई एम टेकिंग, हम सब यही खा रहे हैं ना। अब स्टार्ट हमारा दिन अब इससे होता है, जो न्यूट्रिएंट चाहिए सब मिल गए, ट्रिप्टोफैन मिल गया, नट्स मिल गए, मैग्नीशियम मिल गया, फाइबर मिल गया, उसके बाद एंथोसाइनिन्स मिल गया, सब कुछ एक छोटे से, जो आपकी स्मूदी की इंपॉर्टेंस अब आपको समझ आएगी, यू विल एबल टू अप्रिशिएट दैट। नाउ कुछ अनअवॉइडेबल फैक्टर्स अब बात करेंगे। पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स मोस्टली वी आर अनेबल टू डू अवे विद कंप्लीटली, तो क्या करना है, ट्राई टू एटलीस्ट ग्रो ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो आप स्मूदीज में यूज कर रहे हो, यू कैन ईजिली डू दैट। वी आर, I am more than happy to help you out अगर आपको, do reach out separately for this, because this is not the part of curriculum for the person, but this is a bonus. You can use hydroponics, you can use small vertical farms we call, अगर आपके पास जगह कम है, you can still be able to grow some of the veggies, especially leafy greens, which are very easily to do, जिनके पास टाइम कम है वो भी, at least for your smoothies. दिस इज़ वन ऑफ माई पिक फ्रॉम अ टेरेस, इधर सब कुछ हमने करेला से लेके, वी ट्राइड खीर, कुकुम्बर्स, देन कद्दू, आप छोटा सा अब यहाँ पे यू कैन सी द घिया भी है यहाँ पे, तो लौकी, एंड देन एमरंथस, एंड ये तो हमारा रेगुलर, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आई हैव नॉट बीन बाइंग फॉर लास्ट more than 3 years. Even in summers and winters, I am not buying any green leafy vegetable for my home, at least. ठीक है, see how much you can easily generate at home. And I have a very small terrace, it's a 12 by 5 feet, means 60 square feet, that's it, 60 square meters, sorry. Then this was winters in lettuce, you can see weekly produces so much कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है अपना साग और green leafy vegetables को खरीदने के लिए. And I tried oyster mushrooms also, grown at home only. And see how easily you can easily throughout 8 to 10, these are multiple harvest crops, जैसे ये ओकरा हो गई आपका, these अरबी हो गई, ठीक है, taro roots, you can easily throughout the year they will keep giving you these leaves which you can use in pakoras or sabjis or whatever. And then you can also get taro root in multiple times, means we almost generated 4 kgs last year from 1 kg. This is turmeric, the whole year supply for my smoothies from for the turmeric is from my terrace, means I do not need to buy any turmeric, and I do not use any turmeric powder for this, and this is very easily to grow, means आपको कुछ नहीं चाहिए. These same turmerics are used as seeds for the next year, and also they do not get any insects or pests, तो आपको कोई बहुत मेहनत नहीं करनी. They do not need much of watering also. See this much we have produced in our green smoothies. I told you ना, green smoothie mix आप easily produce कर सकते हो. These are the herbs we are generating from our terrace. Most of the herbs for the smoothies at least are being generated from, be it winters, be it summers. So at least you can start doing it, try it. Minimize तो हम कर सकते हैं exposure if we are not, see so many pests visit my terrace because we do not use any pesticides or insecticides. And also when you are interested in your as a hobby in gardening, your kids will also love being in nature and they will also have a healthier lifestyle. Air pollution, very important factor, giving you various diseases right from the lungs, hypertension,
coronary artery disease, many diseases are directly related to air pollution. Now, how to decrease it? Living in a city, of course, you cannot completely do away it, but I visited Paharpur Business Center because I own a electric car for last 10 years. मतलब जब आप लोगों ने इलेक्ट्रिक बूम के बारे में सुना भी नहीं था, I was using electric car since then. We have been invited to Paharpur Business Center. The owner's name is Dr. Kamal Mietal. He was diagnosed in 1992 with a grave disease called interstitial lung disease. His 80% of the lungs were damaged. Now he was advised by his doctors to leave Delhi and move to some places like Himachal or coastal areas. But he could not because of his various obligations for work and family. So what he did is completely change the environment he is living in. See, most of the time we spend either at home or at office. So he completely changed the environment of the office. Paharpur Business Center do give co-working spaces as rental properties. तो उन्होंने इतना अच्छा उसका इंडोर एनवायरनमेंट बना दिया है बाय चेंजिंग. दे हैव मोर देन 5000 इंडोर प्लांट्स एंड 3 ही टाइप के प्लांट्स वो यूज़ करते हैं, अरेका पाम, मनी प्लांट एंड मदर इन लॉ टर्म, जिसको आप स्नेक प्लांट भी बोलते हो. एंड दीज आर वेरी इजी टू ग्रो, वेरी इजी टू मेंटेन. तो यू शुड स्टार्ट यूजिंग देम एज इंडोर प्लांट्स. तो जब ये करते हो तो आपको दे हैव एस्टिमेटेड दैट फॉर 1% you need 4 such plants, 4 to 6. And this is my electric car which I have been using for last 10 years, means 2013 I got it. And also composting, start decreasing, means it's not about just complaining to the government and complaining about air pollution. We need to play our role. You can start composting. ये आपको एक तो फ्री में खाद देगा जो आप हम बोल रहे हैं किचन गार्डनिंग के लिए, प्लस दिस विल डिक्रीज योर किचन वेस्ट. जो हम डेली गार्बेज वेस्ट है ना हमारा, जब से मैं ये कर रहा हूँ, द गार्बेज वेस्ट इज डिक्रीज टू 1/10 एंड इवन लेसर, बिकॉज देन यू डू नॉट यूज, you just need to keep collecting dry waste like some of the wrappers and plastics you use, and वो आप रिसाइकलिंग में दे सकते हो. एंड जो हम लोग बंद करके किचन वेस्ट को ऐसे फेंक देते हैं ना, इट इज़ पार्शली ऑक्सीडाइज्ड. आप देखते होंगे वजीरपुर के पास, गाजीपुर के पास, या इधर करनाल बाईपास पे जो इतने बड़े बड़े हमारे दे आर गार्बेज मीन्स माउंटेन्स यू कैन कॉल देम. आप कभी रात को जाना, स्पेशली इन समर्स, दे आर बर्निंग ऑन देम सेल्स, क्योंकि हम ग्रीन पार्शियल ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो हम लिफाफे को ऐसे बंद करके फेंक देते हैं, तो पार्शियल ऑक्सीडेशन की वजह से मीथेन प्रोड्यूस होता है, एंड मीथेन इज ए ग्रीन हाउस गैस, वी ऑल नो. So at least we should play our part to decrease the air pollution, just not complaining about it. I have written to various government authorities also and appealed through the videos to Kejriwal and CM Kejriwal, and I have written mails to the Prime Minister also office, but responses, as you know, अगर इसको collectively RWA के level पे किया जाए, we can very large amount of garbage we can decrease getting into our dump yards. So at least we should start doing our job. आपका किचन वेस्ट, दिस इज हाउ आई सी. ये कंपोस्ट, मेरा काम तो ये दिस वर्म वॉश से ही चल जाता है, तो मेरा तो ये वर्म वॉश से चले जाता है. आई हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड more than 80 kgs in last 2 years, 80 kgs of compost to various people free of cost, as a gesture to them to promote kitchen gardening and other things. So this was my presentation. I hope कि आप लोगों को अब अप्रिशिएट कर पा रहे होगे कि यू आर एबल टू अप्रिशिएट वेयर यू आर गेटिंग योर एक्सपोजर फ्रॉम, एंड हाउ टू डिक्रीज योर एक्सपोजर टू वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स. नाउ you can unmute yourself and give any feedback or anything you want to share or any query. Please go ahead. I hope you are appreciating where we are getting exposure, environmental exposure, which is easily avoidable, especially the cosmetics, the hair colors, the preserved foods, the daily drinks you take. Okay, home gardening, start with Dr. Sapna, please start with, अभी जैसे मौसम है ना, I would suggest कि get some shallow but wide these things pots, ठीक है, जैसे जिसको हम लोग कश्ती भी बोलते हैं हिंदी में, या you can reuse many, I am reusing my paint buckets, I wash them thoroughly and use that. तो शैलो वालों में आप स्टार्ट ग्रोइंग ग्रीन थिंग्स. एमरंथ के सीड्स बहुत इजीली मिल जाते हैं. आई कैन शेयर द नंबर वेयर यू कैन गेट इट फ्रॉम.
एमरेंथ इज वेरी इजिली ग्रोएबल, तो एटलीस्ट आपकी स्मूदी के लिए ग्रीन एंड रेड साग मिल जाएगा बड़े आराम से। एंड चौलाई का साग इज वन ऑफ मोस्ट चीपेस्ट एंड मोस्ट न्यूट्रिएटिव green leafy vegetable you can use. Okay, and lettuce and all very easily doable. Compost, when I will be ready with my next batch, I will share with all of you. You can get it picked up. अभी थोड़ा टाइम है बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन, अभी कंपोस्ट स्लो डाउन हो जाएगा थोड़ा सा, बट स्टिल दिस इज द बेस्ट सीजन टू स्टार्ट एक्चुअली। रेनी है ना तो बड़ा इजीली ग्रो कर जाएगा। डोंट स्टार्ट विद दोज एनी फ्रूटिंग वेजिटेबल्स नाउ बिकॉज दे नीड्स लॉट ऑफ पॉलिनेटर्स, फिर आपको फेलियर लगेगा। तो आप यूज जस्ट स्टार्ट विद दिस इधर रूट वेजिटेबल्स, आप हल्दी वगैरह उगाओ, बड़े आराम से उग जाती है, ये सीजन भी है अभी लगाने का। एंड स्टार्ट विद ग्रीन लीफी वंस। एमरेंथ इज द फर्स्ट विच यू कैन स्टार्ट विद। ओके, आई विल शेयर द नंबर फॉर द सीड, जो बहुत चीपली हमें सीड्स देते हैं, उनका नंबर मैं शेयर कर दूंगा ऑन द ग्रुप एंड यू कैन ऑर्डर देम। ओके, एनीवन एल्स? एंड ऑल्सो जैसे आप गट माइक्रोबायोम और आप एक्सपोजर को, इंटेस्टिनल हेल्थ और गट माइक्रोबायोम की बात करेंगे, वी विल हैव ए सेपरेट डिटेल्ड सेशन ऑन फर्मेंटेड फूड्स एंड स्प्राउट्स बाय डॉक्टर गरिमा लेटर दिस मंथ। तो आप अब समझ पा रहे होगे क्यों आपको स्मूदीज और ये डाइट और वीगन डाइट हम बोल रहे हैं, क्यों जीनो एस्ट्रोजन का एक्सपोजर हम कम कर सकते हैं, किस तरह से आप ये बिहेवियर चेंज लाके यू विल हैव ए डिजीज फ्री फ्यूचर। एंड दीज आर वेरी कॉमनली डेली यूज्ड एंड सीमिंगली हार्मलेस, एंड इवन सम लोग हम लोग इसको बोलते हैं दीज आर हेल्दी फूड आइटम्स विच आर यूजिंग एंड गिविंग एक्सपोजर। तो जस्ट गो थ्रू देम and we'll see how to, any queries please go ahead, then we will wrap up. Challenge for the week will be decrease the exercises channels are same which you are following 15 kilometer, ठीक है, and there will be a demo session, first session will be a demo session for exercise next week जिसमें हम strength training को cover करेंगे, and then the challenge will change. अभी आप appreciate, अभी जो आप follow कर रहे हैं, the breathing part is very important, give importance to the breathing exercises along with that. Yes. हाँ, आज के हर सेशन को अप्रिशिएट करते हुए डिक्रीज योर डेली, जैसे आप लोग बहुत कॉमनली हम बेवरेजेस यूज़ करते हैं समर्स में, तो बहुत कॉमन है कोल्ड कॉफ़ीज हो गई, ये हो गया बाहर से, एंड यू कैन अप्रिशिएट दैट पार्ट नाउ, ठीक है। एंड तभी आप लोग बोलते हैं ना हम बहुत मेहनत करें बट वेट कम नहीं हो रहा, यहाँ से गट माइक्रोबायोम के हेल्थ की वजह से, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने की वजह से फिर वेट भी कम नहीं होता, और B12 एंड अदर थिंग। कल के सेशन में आपको B12 की बहुत इंपॉर्टेंस पता चलेगी। हम तो अभी सिर्फ नर्व्स के लिए बात करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हाइपरटेंशन में भी विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल है। तो टुमारो द सेशन इज ऑन हाइपरटेंशन एंड 9 AM you will understand how B12 is directly causing you vascular damage and giving you hypertension, stroke and heart diseases. Okay, so we'll wrap up for today. Bye for now, have a good day.